हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2025 इंटीग्रेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एक्स साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 and x upon 1 minus x square dx, which is given to us gx plus c, where c is a integrating constant. We have to calculate g of 1/2. So यहाँ पे है e power x x sin inverse x upon root over 1 minus x square plus sin inverse x upon 1 minus x square power 3/2 and x upon 1 minus x square. Okay, so we all know कि property we have integration of e power x fx plus f dash x dx is e power fx n plus of c. तो कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मेट सोच सकते हैं, है ना। तो if I'm saying this one as fx x sin inverse x upon root over 1 minus x square, तो I have to check कि this one is f dash x or not. Okay, तो we have to differentiate this function. So f dash x आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 minus x square power, okay, half is already there, तो half square is 2, we will half and square will cancel out, so 1 minus x square only. Here we will get root over 1 minus x square, and in this one u multiply with v rule, so x multiply with 1 upon root over 1 minus x square, then plus we will get sin inverse x minus x sin inverse x and the differentiation of root over 1 minus x square, which is 1 by 2 root over 1 minus x square and minus of 2x we have. Okay, so now f dash x is equal to, multiply this root over 1 minus x square inside, so we will get x plus root over 1 minus x square sin inverse x, okay, minus and minus plus, and we will get here sin inverse x x square upon root over 1 minus x square whole divided with beta we have 1 minus x square. Okay, तो एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x root over 1 minus x square. Here we will get this one as a sin inverse of x 1 minus x square, and this one sin inverse x multiply with x square upon 1 minus x square power 3/2. अब इसको यदि आप स्प्लिट करते हो तो यहाँ पे देखोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x कॉमन है हमारे पास, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाल एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट और आपके पास बच जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. ओके, तो हमें अब चेक करना है कि क्या ये एफ डैश एक्स है या नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एफ डैश एक्स में है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एंड x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही फंक्शन आ रहा है, विच मीन्स the given integral we have in the format of e power x f dash x, fx and f dash x. Okay, so इसका जो आंसर होगा वो e power x fx होगा आपके पास प्लस ऑफ सी। तो हमारा जो gx है अब यहाँ पे, है ना, उन्होंने कहा ना कि दिस फंक्शन द इंटीग्रल इज इक्वल टू gx प्लस सी, तो gx जो होगा वो आपका हो जाएगा बेटा e पावर x एंड fx. fx इज x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब आपको कैलकुलेट करना है g ऑफ 1/2, सो e पावर 1/2 साइन इनवर्स 1/2 वी नो इट इज पाई बाई 6 and 1 minus 1/4, so e power 1/2, this one we will get a pi by 12 and root 3/2. Okay, so pi by 6 e power 1/2 and root 3 we have, that we can write e by 3. Okay, pi by 6 and root over e by 3.
So pi by 6 root over e by 3 is our option number 1. Okay, thank you.